So this is the day when we have now learnt about the verb, and on this day we are going to understand about how to change into passive voice. So as I had told you about the active voice sentences in 4 flows, I had told you I loved Allah, I love Allah, I shall love Allah, I was loving Allah, I am loving Allah, I shall be loving Allah, I had loved Allah, I have loved Allah, I shall have loved Allah, I had been loving Allah, I have been loving Allah, I shall have been loving Allah. So all these 12 sentences are called active voice also, because these are the positive sentences, positive sense. It is called the active voice. Now we are when we like to change into passive voice, so there must be some changes, some replacements of the subject and object. And for this purpose we had to learn by heart the personal pronouns also, because if we know the subjective case and objective case of the personal pronouns, then we shall be able to replace these the pronouns. Just like this, he is a subject in subjective case. So we must have the knowledge of these personal pronouns, objective case and subjective case. So we should know, we should have in our knowledge that the personal pronoun objective case of he is him. So whenever we change into passive voice, so we will replace this the subject, this personal pronoun there, and it is he. So we shall put he. He sang a song. Sorry, here he sang a song. A song was sung by him. Yes. Right. This is the objective case of he, full stop. So this is the very first lesson of active voice and passive voice. So he sang a song. As we know that he is subject here, and sang is of the verb, and verb of the past indefinite tense. He sang a song. I loved Allah. I wrote a letter. So he sang a song. So he is a subject. Sang is a verb, and verb of past indefinite tense. Second form. Yeah. It is in second form. And a song, it is a noun, that is a direct object. Okay, a direct object. So he sang a song. So whenever we want to change it into passive voice, so we should put the object in the place of subject, and we should put the subject in the place of object, and even in objective case. And if there is also a
pronoun, so that will also be replaced here, but it will be in subjective case. Just like if I love you, he loves her, he loves her. So her will be changed into she and he will be changed into him in objective case. So that's why we see here that this subject he is changed here into him, and we shall write here by him. And a song will be replaced, a song will be replaced by the subject he. So this object will be placed here, a song, and we know that it is the second form. So वैसे मैं आपको आसानी के साथ एक और तरीका भी बताऊं, for your ease, that the form of the verb, जो भी आप ये देखें ना कि जो वर्ब की जो फॉर्म है, तो जो वर्ब की फॉर्म है आपने बी की वो फॉर्म लगा देनी है यहाँ, ये ध्यान में रखना. Put it into your mind that we will write here the form of B, the form of B, the same form of B that is the form of this verb. We see here that it is in second form. So the second form of B is was. B was been. B was been. Is was been, am was been, are were been. Okay, so we should write here the form of be, the same form that is the form of the verb here. This is and this principle and this regulation will be applicable in all the sentences. The passive voice sentences. In all the passive voice sentences, yes. In all the sentences, the same form of be will be put here with the form of verb. That is the form of the verb. So the form of the verb here is sang, second form. So we should write here was, and the form of the verb will be changed into third form. Always in all the passive voice sentences we shall change the form of the verb into third form. So if we see if we see here, the passive voice sentence is actually in the same sentence. It can be changed even from the same sentence. We will not put anything from outside. We have already here all the things. Just like this. This is a song is here already. He is already, so we shall change it into him in objective case. By is always used. By is always used before the recent object. Before the recent object. By is always used. Somewhere it is not used. Somewhere. Like married is married, not married by him, married to him. So there are some places. Yes. And our song is already here. By is always used, and form of the verb is always third form used. Always used in passive voice sentences. And now only one thing remains here. One thing that we have to derive, that where from we shall take this thing. So this thing will be taken from the very form of the verb. Okay, because this is form of the verb is second form, so we shall use here
the second form of B, and that is was. So he sang a song was sung, a song was likewise, on the same pattern, on the same rule and regulation, on the same way. If I say that I sang a song was sung by me, I sing a song is sung by me, I shall sing a song will be sung by me, I was singing a song was being sung by me, I am singing a song is being sung by me, I shall be singing a song, there is no change in for passive voice. And I had sung a song had been sung by me, I have sung a song has been sung by me, I had been singing a song, no change, I have been singing a song, no change, I shall have been singing a song, no change. There are only 4 tenses, there is no change. Where is no change? In the 8 tenses we can change into passive voice. So today only I have taught you about the passive voice of past indefinite tense, and God willing we shall go. So it should be translated in Urdu also in the video. या ये आसानी की खातिर अगर आप इसको समझना चाहें तो मेरा ख्याल है बहुत आसान है कि अगर हम ये देखेंगे ही sang a song, तो अगर हम कहेंगे जी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का आसान तरीका ये है कि सब्जेक्ट को आप बना देंगे, ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे और उसकी ऑब्जेक्टिव हालत लगाएंगे, उसकी जो है मफऊली हालत, और ये ही है, ही की मफऊली हालत हिम होती है। तो ये वैसे जो है ना कम अज कम इतना तो हमें पहले से रट्टा लगाना चाहिए। आई माई मी वी आवर अस यू योर यू ही हिज हिम शी हर देयर देयर देम इट इट्स इट, इस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव जो है ना सब्जेक्टिव केस भी आना चाहिए, पोजेसिव केस जो है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जगह पे इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। हाँ, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव केस होंगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस जो हम चेंज करेंगे उसको पैसिव वॉइस की जगह उसको ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो जाहिर है केस भी वही, हालत भी वही होगी उसकी। अगर सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में ले आएंगे, उसकी मफऊली हालत होगी, ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्टिव केस में ले आएंगे उसकी। सर I think I beat him should be written here and it should be converted into passive voice. I beat him. I beat him or I love him. I love him. So I love him. तो अब देखें ना, उधर भी जो है ना ये पर्सनल प्रोनाउन है, उधर भी पर्सनल प्रोनाउन है, तो उसका हिम जो है वो मफऊली हालत है, ऑब्जेक्टिव केस है, और जो है आई वो उसकी फाइली हालत है। तो जाहिर अब जब ये बाहमी म्यूचुअल चेंज होगी, रिप्लेसमेंट होगी, तो जब उसके प्लेसमेंट जब हेम की होगी तो ही बन जाएगा, आई की भी बन जाएगा, मतलब ये हमें याद होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर जो है ना चेंज करने के लिए आसान तरीका ये है कि हमने आ सॉन्ग पहले ले आना है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह ले आना है, और इसको ही जो है इसको हम ले जाएंगे उसके ऑब्जेक्ट की जगह, हिम बाय हिम बन जाएगा। बाय हमेशा इस्तेमाल होता है सिर्फ चंद जगहों के ऊपर जो है ना, और जैसे नोन बाय हिम नहीं होता बल्कि नोन टू हिम, मैरिड बाय हिम नहीं होता बल्कि मैरिड टू हिम, तो कुछ जगह होती है जहाँ पर चाहिए, तो वरना बाय तकरीबन सब में लगता है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कोई चीज भी आपको बाहर से नहीं लानी पड़ती, सारा कुछ एक्टिव वॉइस के अंदर ही, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर ही होता है, सिर्फ चंद उसूल सीखने पड़ते हैं। मसलन आप पूछेंगे जी फिर वाज कहाँ से आ गया, वाज तो उसमें नहीं है, चले ये हम मान लेते हैं कि जी ही को हिम बना दिया आपने, आ सॉन्ग को इधर ले आए, और सैंग दूसरी फॉर्म है उसको आपने तीसरी फॉर्म बना दिया, थर्ड फॉर्म बना दिया, तो ये वाज कहाँ से आ गया, तो वाज भी इसी के अंदर था। वो इसके अंदर ऐसे था कि ये सेकंड फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म वर्ब की होगी ना, तो वर्ब की जो भी फॉर्म हो आपने वही फॉर्म लगा देनी है बी की, इसके फौरन बाद सब्जेक्ट जो अभी आपने रिसेंट सब्जेक्ट आपका बना है ना, इस सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने
बी की वो फॉर्म लगानी है जो फॉर्म वर्ब की है। तो वर्ब की फॉर्म चूंकि सेकंड है इसलिए बी की फॉर्म आ जाएगी वॉज, बी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वॉज। तो हाँ एक और बात याद है, अगर ये आ सॉन्ग की बजाय सॉन्ग्स होता, प्लूरल होता, तो ये वॉज नहीं होता, फिर ये वर्ब होता, क्योंकि सॉन्ग्स मतलब इसके मुताबिक यहाँ पर हमें चेंज करनी है। तो बी की फॉर्म जो है ना वो फिर हमने लगानी थी वर्ब, लेकिन यहाँ क्योंकि ये सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है सब्जेक्ट, इस वजह से यहाँ अ सॉन्ग वॉज सॉन्ग। अच्छा इसके लिए आसान एक और भी कुलिया है मेरे पास, वो सिर्फ आप इस तरह से याद करें, टेक इज टेकन, टुक वाज टेकन, टेकन बीन टेकन, टेकिंग बीइंग टेकन, बस ये सारे सेंटेंस आपने बना लिए। अगर आप जहन में बनाने ना टेक इज टेकन मतलब फर्स्ट फॉर्म हो तो आप इज एम आर थर्ड फॉर्म लगा दें, इज टेकन एम टेकन आर टेकन, ये इस तरह से टेक इज टेकन। अगर प्रेजेंट है तो टेक इज टेकन, टुक वाज टेकन, टेकन बीन टेकन, टेकिंग बीइंग टेकन। तो इन चार सेंटेंसेस के साथ आपको पैटर्न सारा समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको मेन चीज चेंज करनी है सिर्फ ये, सिर्फ वर्ब की चेंज करनी है, बाकी तो सिर्फ रिप्लेसमेंट होती है। वो जो है ना ये आ सॉन्ग इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, उससे पहले बाय लगाना है। तो मेन चीज होती है सिर्फ ये वाज सम, ये सैंड वाज टेक इज टेकन, टुक वाज टेकन, टेकन बीन टेकन, टेकिंग बीइंग टेकन, बाकी वही का वही जो होगा वो सिर्फ इतना जरूर होगा कि फाइल के मुताबिक देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर आ सॉन्ग है तो वाज लगेगा, अगर सॉन्ग्स है तो यहाँ पर। इसी तरह से अगर आई है, आई हुई, उसके मुताबिक विल शैल अगर हो तो यहाँ विल और शैल उसके मुताबिक लगेगा ना, आई हुई के मुताबिक। ही है तो फिर विल लगेगा, आई हुई है तो शैल लगेगा। वो होती है वर्ब की, बस वर्ब की चेंज हमें आनी चाहिए। तो आज हमने ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सीख लिया। तो नेक्स्ट हमने फिर जितने भी बाकी होंगे उसूल यही चलेगा, बस उसूल आप ये रख लें कि जो है ना इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आना है, और इस रिसेंट ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देना है, और अभी उससे पहले वो बाय से पहले थर्ड फॉर्म लगानी है। ये तो हमेशा होगा ना, इतना तो हमेशा होगा, ये याद रखें। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और रिसेंट ऑब्जेक्ट से पहले बाय, बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आपने हमेशा करना है, इतनी चेंज आपने हमेशा करनी। सिर्फ एक चीज रह जाएगी ये वाली कि जी ये हम कहां से लाएं। तो बस ये आपने यहां देखना है कि जो भी वर्ब की फॉर्म है अब यहां पर वही बी की फॉर्म लगा दें। यहां अगर वर्ब की फॉर्म है ही सिंग्स द सॉन्ग, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर फिर बी की वही फॉर्म लगा दी, फर्स्ट फॉर्म बी की फर्स्ट फॉर्म, तो बी नहीं लगाना, इज लगाना है, या इज लगाएं या एम लगाएं या आर लगाएं, appropriate, आप एप्रोप्रिएट जो उसके मुताबिक जो इसके सूट करता हो। no it is now link verb or helping verb was in passive voice, वर्ब है ना, वर्ब के अंदर है, हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है जो वर्ब को हेल्प कर रहा है, जो वर्ब को हेल्प कर रहा है। ओके, थैंक यू। I think should be stopped, you should be stopped.